आज के इस लेक्चर से चैप्टर 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शुरुआत करेंगे। इसमें सेक्शन 10 टू 30 कवर होते हैं। सेक्शन 10 जो है वो अबाउट व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। आज के इस लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे ही इस पूरे मॉड्यूल में अप टू सेक्शन 19 कवर करेंगे। इसके बाद अगले मॉड्यूल में 20 टू 30 कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। जो इसकी डेफिनेशन दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो इस प्रकार है। ऑल द एग्रीमेंट्स all the agreements all the agreements are contracts. all the agreements all the agreements are contracts if they are met if they are met by free consent made by free consent by free consent by free consent of the parties competent to contract competent to contract for a lawful consideration for a lawful consideration and with lawful object lawful object and are not and are not hereby expressly declared void declared declared to be void means all the agreements will not be automatically contract. वही कॉन्ट्रैक्ट होगा जो लीगली इन्फोर्सेबल होगा। मीन्स that should have the that should have free consent and lawful object, lawful consideration. All this should be consistent. Then only it will be that agreement will be a contract. जैसे हम लोग जानते हैं एग्रीमेंट क्या होता है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। मीन्स जो भी एग्रीमेंट हो उसमें जो प्रपोजल हो उसका जो प्रॉमिजी है उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो इट शुड हैव वैलिड प्रपोजल एंड acceptance, then only it will be agreement. Now question arises, which agreement will be the contract? The contract will be only those agreements will be only the contract which can be legally enforced. So agreement free consent, जो भी पार्टी है दैट जो कंसेंट जो दोनों पार्टी के बीच में कंसेंट हो दैट शुड बी free from question, undue influence
undue influence, free from misrepresentation, mistake, and fraud. Mistake and fraud. Competent party, जो competent party होगी, that should have attained the age of majority and of sound mind. So जो competent party होगी, that has attained age of age of majority या majority age, जो कि मेजॉरिटी एक्ट दिया गया है 1872 से 9 ऑफ 1872, जैसे इंडिया में ओवर द 18 years of age. तो अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी एंड ऑफ साउंड माइंड इंसेंटिव नहीं होते ऑफ साउंड माइंड. लॉफुल कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन हो, दैट शुड हैव सम वैल्यू, समथिंग ऑफ वैल्यू एंड शुड बी लीगल. समथिंग ऑफ वैल्यू, जो भी ट्रांसैक्शन हो, जो एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन हो, दैट शुड बी ऑफ समथिंग ऑफ वैल्यू and legal. Lawful, the object should be lawful. जो भी हमारा एग्रीमेंट है, जो उसका ऑब्जेक्ट है, that should be legal. It should not be illegal and violent. So the object should be legal. The object of the contract, or object of agreement should be legal, which can be enforced by the law. The agreement should be legal. Should be legal. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उनके जो एलिमेंट्स होंगे, A agrees to sell his car to B for ₹5 lakhs. तो both are adult. जो A and B है, they are adult, means have attained the age of majority. इनमें फ्री कंसेंट है, कोई क्वेश्चन नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, मिस्टेक नहीं है, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो कार है ही नहीं, उसको बेच रहा है, मीन्स एवरीथिंग इज लीगल. सो फ्री कंसेंट है एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेल इज लीगल. जो कार है वो लीगल है, हेंस दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज एग्जांपल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एंड द एग्रीमेंट, जो इस तरह के एग्रीमेंट बनेंगे, दैट विल बी वैलिड एंड दे कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द लॉ. In valid contract, a minor agrees to buy laptop from B. Contract is void since the age of minor. तो जो minor है, is not competent to contract. तो इसलिए क्या कहते हैं, ये this contract is void and minor is not competent for entering into the contract with someone. Illegal object, A agrees to B to commit a crime. The object of agreement is a crime which is illegal and void. So ये भी void agreement होगा. Illegal object, the contract is void due to an unlawful object. So with this we have completed section 10 धारा 10 of Indian Contract Act. आगे धारा 11 के बारे में पढ़ें.